Hello learners, this is Sandeep Rathod and I welcome you at our channel IAS for you, and I'm gonna guide you in the areas of polity and economy for bettering your preparation for IAS. So now onwards, as you have started studying with me, you got to listen my every word very carefully. If you are a civil service aspirant, then you are at right place. We're going to introduce you the best program to help you out in our preparation, in your preparation, and my initial videos will be very helpful for beginners specifically. So how am I going to help you guys? I have brought for you the foundational program which will correct you and help you understand the syllabus of UPSC civil service examination, and specifically what UPSC expects from an examinee. This is the question. Okay, it is nothing but a clarity of concepts so that he or she can grab ideas of given situation and uh, deal with it in a very pragmatic way, in a very practical way. So hence, to make your foundation very strong enough to understand the syllabus and prove yourself you are the right person for this examination, you should not miss this opportunity. So be with me. Every successful candidate must go through the NCERT books. Okay, you might have heard from the people usually, or those experienced candidates. Yes, you should go through the school level syllabus once again, because then only you can have all concepts clear. यह बात सच है कि अगर NCERT नहीं पढ़ोगे तो इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ोगे. ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको ना सुनने में आया होगा या फिर कभी सुनोगे जो यूपीएससी की एग्ज़ाम पास कर लेता है बिना NCERT पढ़े. NCERT पढ़े बगैर कोई पास हो ही नहीं सकता. ओके, so here myself and my colleague Mr. KK Mishra sir will help you out in managing your preparation. So keep watching our videos regularly and don't forget to like and subscribe at the end. Okay, so dear learners, in this session I am going to deal with polity from NCERT. I will regularly bring you precise discussion on the NCERT syllabus. So now onwards, discussion will be held in this way, that I have grouped this NCERT's syllabus in three categories. Okay, particularly why means you might have get the question, why am I so much emphasizing on the particularly NCERT preparation or studying through the NCERTs? Because there are certain important do's and do nots. Okay, every civil service aspirant should begin preparation beginning with NCERTs only. One should not hurry up very much to go through the reference books directly, because jumping on reference book directly may dwindle with the way and you may get distracted. Okay, or you may get difficulties in understanding the basic crux of the concepts, and you may experience a fall down in the preparation that may bring out the boredom and may bring in you a certain kind of monotony in reading the syllabus. So be very specific first. Means try your approach step by step. First go through the NCERTs and then jump on the books, reference books particularly. Okay, so one should thoroughly analyze the previous year question papers and decode what exam expects from the candidate. Okay, many time what happens that altogether you might not have gone through this phenomenon, but we have experienced it, that most of the students or candidates usually read hefty amount of books and the material they go through, but they cannot understand what exactly UPSC expects from them. Okay, generally it is a very simpler approach towards the examination. You need to bring clarity of concepts and in your approach, and to to deal with the questions directly. Okay, so many people cannot manage it, okay, because they do not have the strong foundation. Okay, they cannot understand the way UPSC asks them the question. They cannot understand what they have to give back to the answer to the question in the form of answer. Okay, so
analysis of previous year question papers and your foundation, which can take you to the level where you can strike the right balance and write good answers. Okay, so uh, one more point I can emphasize here, that don't hesitate to build your foundation very strong. Okay, never experience any parsimony. Please spend extra time on the foundation particularly. Okay, reading basic books are very important in this way. Okay, so what we are going to do here, that I have grouped the NCRTs for polity in three groups, because if you analyze the pattern of syllabus given and the way the NCRT expects concept of candidate to be built up, is very much practical in a way. So I have an idea to compile the bunch of topics together in one group and others in another one, like 6th, 7th and 8th standard NCRTs. The chapters given in these three books are so much vivid, so much basic, lucidly explained. If they are discussed together or brought up together in consonance with each other, then that may bring better understanding of the concepts given. Okay, so for that purpose I have grouped, in first group 6, 7 and 8 NCERT, in second one 9th and 10th, and in third one the 11th and 12th. Okay, so the only reason behind grouping these NCERT is to aggregate the relevant topics together for better conceptualization, because one topic is certainly linked with another. For example, if you're talking about diversity in our nation, means अनेकता, हमारे देश में अनेकता बहुत ज़्यादा प्रमाण में दिखाई पड़ती है, then inequality is bound to happen. Okay, तो यहाँ पर थोड़ा असमानताएं तो दिखाई पड़ेगी. And to safeguard the right to equality of a citizen, Constitution comes to rescue, and it empowers government to make such laws to stop people or institution, government or private any institution, from practicing inequality. Okay, in this way again the court is another institution. Court comes in action and provide justice against a violation of right to equality of any person. Okay, so here you can see the people's right, diversity, equality, court, government, laws, all come in action together. Okay, they are all connected with each other. They have to be understood in consonance with each other. Okay, so their coexistence must be understood. For that reason I have grouped these books together. Okay, so if you have purchased the NCERT books, or you will purchase NCERT books, then I suggest you to go through the syllabus given in this book, 6th, 7th and 8th standard, and then you will find out that the topics are much relevant. Once you at a glance read the syllabus, you will understand how they are connected with each other. Okay, so here I have some ideas about the compiling of these topics together. Okay, so let's talk about the first group, 6th, 7th and 8th standard NCERT. We will begin with the 6th standard syllabus. Okay, so here I have mentioned you the actually the cover photos of the NCERTs that you should purchase from the store. Okay, so and you are also expected to note down certain important points while I am depicting them here, because these links will help you to build up your concepts further. Okay, because if it is given in the 6th, 7th or 8th standard books, then they are so much elementary concepts, and I am not going to discuss very much hefty concepts here, but these concepts are very much relevant in understanding. Okay, हमें फिर से स्कूल पढ़ना ही होगा, ये उसका मर्म है, समझने की कोशिश कीजिए. Okay, let's move further. The very first topic that I am going to deal with is what is government. The question,
a very important question. Once you start preparation, you will understand. If we are not ready to understand the system, okay, either it may be, whether it may be social system or political system or economic system, we cannot understand our relevance in that system. So we cannot understand the phenomenons occurring in that system surrounding us. So we may lack that link to understand these systems together. So we fail to understand that how and why, okay, the appropriation or misappropriation of the system are occurring. Okay, so we are bound to understand everything around us, particularly the political system which guides our nation, which actually controls our nation and bring every citizen together, compiles a organized unified society, and we are being the part of it. Once you become an officer, you will understand that how you are being very subtle and very essential part of the system, and you'll become an indispensable agent in in connecting people and government all together. Your role will be very much appreciated, and it will be expected more from you to solve the problems occurring in a complex society, while we are leading a very complex life in this world in today's time. Okay, so आपको बड़े जागरूक तरीके से हमारी सिस्टम्स का, हमारी यंत्रणाओं का विश्लेषण करना है, एनालिसिस करते रहना है. Okay, so when we talk about what is government, very first thing should come in mind that what is government. Okay, this government is very important word. Okay, we will define it later after having certain discussions, very common discussions here on. So what government does for us? Okay, if we go through the basic things, that every country needs a government to run the country according to some law. Every country, like India, is also having the government. Okay, now this government is headed by Mr. Modi. Okay, and there are certain other organs of the government are too acting. We will discuss about those organs later. And the government plays an important role in our lives and does a number of things for the people. Okay, so what government does for us? Let's imagine. Okay, our lives are encircled by the government every now and then, and our every need cost to be fulfilled by the government. Okay, how? Let me explain. Imagine how do we live every day? We live every day to fulfill our needs of goods and services. Let's say in the category of goods, you may need food, house, clothing. Okay, in the form of services, you may need roads, transport, electricity, sanitation, health, right? And other very important services like security. Consider, see, law and order is very important service. Okay, it provides with security too. Law and order. What is law and order? That in accordance with the law framed by our legislature and the rules and regulations framed by the government, the administration causes it to it to obedience by the people. If they are not following the law, then disharmony may prevail automatically. आप सिंपली इमेजिन कीजिए, सब अराजकता, अनार्की फैल जाएगी. आप रोड से चल रहे हैं और कोई आपके पास चाकू दिखा आपकी चेन छीन ले, आपके गहने छीन ले, आपको छक्को मार के चला जाए, आपके पैसे छीन ले. कोई कभी भी कोई भी क्राइम कर लेगा, कोई आपके ज़मीन पे ट्रेस पास कर लेगा, कोई आपके घर में घुस जाएगा और कहेगा मैं ही मालिक हूँ, तो आप क्या करोगे? कोई कानून तो बनता है. कानून और सुव्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है. तो लॉ एंड ऑर्डर, कानून और सुव्यवस्था, ये ज़रूरी तरीके से हमें मिलनी चाहिए. अगर ये ना हो तो हमारा जीवन असुरक्षित हो जाता है. यही नहीं, अगर समझो कोई पड़ोसी देश अगर हम पर आक्रमण कर दे तो उससे कौन बचाएगा? इसके पहले वॉर हो चुके हैं पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ.
तो हमारी सेना ने हमारा प्रोटेक्शन किया. सो सेना पर्टिकुलरली द फोर्सेस आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट मेक्स वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग दैट. ओके, उससे भी ज़्यादा कई इंपॉर्टेंट चीज़ें भी है और भी है. एम्प्लॉयमेंट, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट ना हो, भले वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, बिजनेस हो, कुछ भी, अगर एम्प्लॉयमेंट ना हो तो आपकी रोज़ी रोटी कमाने का ज़रिया नहीं ढूंढ सकते. योर वेरी द बेसिक रूट ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड विल बी जस्ट डिमिनिश्ड and you will be proved useless. And moreover, you may need essentially certain opportunities to make your life better. And how your life will become better by the opportunities to learn new things, opportunity to learn skills, opportunities to go to the school, have education, okay, to meet the people, to be a part of society, to build your confidence, everything. सो एवरीथिंग इज कॉस्ट टू बी फुलफिल्ड बाय द गवर्नमेंट. मतलब अगर सरकार या गवर्नमेंट नामक कोई संस्था ना हो तो हमारा जीवन सरल नहीं हो सकता. देयर विल बी नो पीस एंड हार्मनी. इमेजिन वी ऑल आर लिविंग इन अ जंगल एंड देयर इज़ नो को एग्जिस्टेंस. हम जंगल में रहते हैं और कोई एक दूसरे के साथ नहीं रहता, सह अस्तित्व नहीं है. तो शांतता में सह अस्तित्व की बात छोड़ दीजिए, सह अस्तित्व नहीं है तो कैसा हो. तो हमारी सोसाइटी नहीं बन सकती, समाज नहीं हो सकता. समाज लोगों से मिलकर होता है. लोग जब एक साथ अलग अलग धर्म के, जाति के, वर्ण के, भाषाओं के, परंपराओं के लोग एक साथ आते हैं तो समाज बनता है. ऐसे समाज विकसित होगा, हर व्यक्ति का विकास उसमें निहित होगा. इन बातों को समझना अनिवार्य होता है. ओके, सो इसलिए हमें सरकार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. ओके, सो कलेक्टिवली इसी को हम कहेंगे कि व्हाट इज गवर्नमेंट देन. सो गाइस, गवर्नमेंट इज द सिस्टम or group of people governing an organized community, or it is the group of people who officially control or rule the country. Okay, in this way we can move ahead. Let's talk about the organs of the government. In various countries, wherever there may be any kind of government prevailing, but usually government have three organs. It consists of three organs, namely legislature, executive and judiciary. Okay. What legislature does then? Legislature, आपने सुना होगा legislature मतलब विधि पालिका. ओके, जो विधि मतलब कानून बनाने का काम करे. एक संसद आपने सुना है, संसद, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट मिलकर संसद कार्य करती है. और राज्य स्तरों पे विधानसभा और विधान परिषद जैसे ऑर्गेनाइजेशंस होते, इंस्टीट्यूशंस होते. सो यहाँ पर जो भी लोग कानून बनाने की प्रक्रिया करते हैं उन लोगों को हमने चुन कर दिया है. और दे बिकम द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर. दे आर आवर लेजिस्लेचर. दे मेक द लॉज एंड they make the law to control the country and direct every aspect of the governance. हमें चलाने के लिए, हमें दिशा निर्देशन करने के लिए कानून की ज़रूरत होती है. लोग किसी और चीज़ को माने ना माने, कानून को ज़रूर मानेंगे. कानून को ही मानना पड़ेगा, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति को माने ऐसा ज़रूरी नहीं है. इसलिए कानून सबसे बड़ी प्रक्रिया. सो संविधान हमारा सबसे बड़ा कानून है. और संविधान ने ही अलग अलग समय में जैसे ज़रूरत हो हमारे जटिल समाज की, वैसे वैसे कानून में बदलाव करने की या नए कानून बनाने की प्रक्रिया का प्रावधान संविधान में दिया है. इसलिए लेजिस्लेचर यानी विधि पालिका गठित करने का हमें प्रावधान दिया है. सो लेजिस्लेचर किसी भी लेवल पे हो, इनका काम है कानून बनाना और हमारे देश के शासन को चलाने के लिए निर्देशन करना. ओके, सो एग्जीक्यूटिव्स मतलब कार्यपालिका. व्हाट आर एग्जीक्यूटिव्स? व्हाट इज एग्जीक्यूटिव? सो एग्जीक्यूटिव इज एक्चुअली एन इंस्टीट्यूशन. इट एनफोर्सेस द लॉ एंड मेक्स द डिसीजन. एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका में कौन होते हैं? जैसे हमने बताया कि प्रधानमंत्री, उनके कैबिनेट मिनिस्टर, उनके मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव्स का पार्ट बनती है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद जो होता है. ये जो संसद ने बनाए हुए कानून है या जो प्रचलित कानून है, या फिर अगर ज़रूरत हो तो अपने निर्णायक शक्ति के आधार पर एक कोई नियमन का गठन कर सकती है और उसके द्वारा देश को चला सकती है, निर्णय ले सकती है. ऐसे एग्जीक्यूटिव्स. अभी आप सोच सकते हैं कि इस समय
किस तरह से कोरोना के संदर्भ में हमारी सरकार देश को चलाने का प्रयास कर रही है और अलग अलग राज्य सरकारें भी देश को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन ले रहे हैं इन द हैवॉक ऑफ द कोरोना वायरस। द लॉकडाउन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, okay, and under this prevailing circumstances you may try to understand the levels of the decision making are occurring this time. Particularly decisions are being made at the central level by the prime minister, home ministry, the health ministry, and at the state level by the chief minister and his ministers, and at the local level by the municipal corporations and then the district collectors and all these people. Okay, so executives are about to enforce the law. Okay, they bring in the law in action. Okay, so the third organ is judiciary interprets the law and protects the rights of the people. Okay, तो जो भी कानून बनाया वो सही है या नहीं है ये कौन डिसाइड करेगा? मतलब कार्यपालिका या फिर हमारी विधि पालिका, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये चाहे अगर शक्तिशाली होते हो सकता है कि कोई गलत कानून बनाने और हम लोगों के ऊपर राज करना शुरू कर दें। तो इन्होंने बनाए हुए कानून या नियम क्या वाकई में न्यायिक है, ये कौन तय करेगा? तो ये तय करने का अधिकार कोर्ट कानून का मतलब लगाती है और लोगों के अधिकारों को बचाने का कार्य करती है, लोगों को न्याय दान करती है, लोगों की आवाज़ सुनने का काम करती है। ओके, तो जुडिशरी, वी हैव फेथ इन जुडिशरी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, वी कैन अंडरस्टैंड। हम इन तीनों ऑर्गन्स के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे अलग वीडियो में, मीन्स लेजिस्लेचर के ऊपर अलग से वीडियो बनेगा, वो डिटेल में बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चंस आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस। ओके, सो प्रीलिम एंड मेंस दोनों के क्वेश्चन को टैली करते हुए, एनालिसिस करते हुए हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो now let's talk about the levels of the government. What are the levels of the government? वैसे government in any country functions at several levels like central, state और local level. केंद्र, राज्य और स्थानिक प्रशासन, स्थानिक स्तर पर अलग अलग तरह की गवर्नमेंट होती है। बहुत सारे देशों में ऐसा भी है जहाँ पर लोक संख्या कम है या फिर जिनका जोग्राफिकल एक्सपांस कम है, वहाँ पर सेंट्रल लेवल और प्रोविंशियल लेवल ऐसे डायरेक्टली होती है। कहीं कहीं काउंटी लेवल भी होता है जो लोकल लेवल को दर्शित करता है। सो इन दिस वे वी कैन सी दैट देयर आर 3 levels of the government: the central, state and local level. So at central level we may see central government is consist of prime minister, his council of ministers, those are known as union executives. Okay, right? And all other institutions attached with these functionaries are part of the central government. Okay, at the state level the same way, chief minister and his council of ministers, those are known as state executives. And at the local level that जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ये सब होते हैं. So central government look after the nation, entire nation, means like prime minister's decision affects the entire country, right? So what home minister deals with, it affects the entire country. So union executives may make decision for entire country. Every single part of the country is actually guided by the central government, right? The state government looks after the state provinces. They are limited up to the state, respective state. Like in Maharashtra, the government chief minister of Maharashtra makes decision about the Maharashtra only. He cannot override his territory. Okay, he cannot overwhelm in his authority to rule on other territories. So he is limited up to Maharashtra's territory, and he makes decision about the Maharashtra people only. Okay, so local bodies here we say that at the village level, ZP means Jilla Parishad works at the district level, Panchayat Samiti at the block level, Gram Panchayat at the village level, municipal corporation, Nagar Parishad at the urban level. Okay, they are also the functionaries, means they are also the level of government. Okay, at their respective places they make very important decisions, like in this corona situation, right? What we see that even after the central government or state government have given some certain directives, okay, some extra directives or some extra applications of laws
and the stringent actions are made by the local authorities too, like municipal corporations of various cities have shown their own mettle in dealing with the corona havoc. Okay, so corona situation, so they are functioning in their jurisdiction too, so it happens. So now let's talk about at a glance what is the relation between law and government. Okay, see guys, we will talk about every single detail of organs of the government and levels of the government with respect to the analysis of the previous year questions. Okay, the manner they have been asked, the manner they expected answers from the candidates. Okay, we will discuss them later. The more advanced level will be brought to you. Okay, keep on watching the videos. Okay, we have initiated the series. Okay, so me and myself, particularly myself Sandeep Rathod, and my colleague KK Mishra sir, whose channel is IES for you. Okay, may guide you all throughout the insights from the basic level and will bring you to the higher level of the understanding about the syllabus. Yeah, so laws and government relevance. See, laws are made by the government, particularly legislature, I have mentioned you, and as citizens of a country, we people have to abide by it, right? The government, particularly executives, has the power to enforce these laws. Okay, so they can enforce these laws. Means they prepare the laws framed by parliament will be enforced by the executives. Like what happened in abrogation of 370 regarding Jammu Kashmir, or other laws particularly. Okay, you may take a reference of any current legislation framed by the government and legislature particularly, and government have imposed enforced them into the action, right? And the court, particularly judiciary, have the power to give justice to the aggrieved party. Aggrieved party means कोई भी जनता हो या व्यक्ति हो या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हो, प्राइवेट या गवर्नमेंट, किसी के ऊपर भी अगर अन्याय हुआ हो तो वो कोर्ट के पास जाकर न्याय मांग सकती है. Okay, so let's talk about the types of government. So across the globe, you may find many countries have different types of government. Laws are made by the government in a manner depending on the types of government in the country. इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग देशों में कानून वहाँ के सरकार किस प्रकार का अस्तित्व है उसके ऊपर उपरांत बनेंगे. Because the laws made by the government exhibits the will of the government in power. Okay, so what kind of government is in power will determine what kinds of laws will be made. Whether laws are arbitrary, where laws are violatory of the rights of the people, where laws are very much ruthless, cruel to the people, or laws are very much welfare oriented, pro people, pro women, pro development. What else will be? Okay, so ये depend होगा किस type of government वहाँ पर है. Like the most prevalent kind of government across the globe, which is anticipated from the modern society to establish the democratic governance. और बहुत सारे देशों में डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र है. यहाँ पर लोग अपने ही द्वारा अपने भीतर, अपने ही समाज के भीतर से कुछ लोगों को, जो लायक लोग, कुछ लोगों को चुनकर सत्ता चलाने का मौका देते हैं. ठीक है, तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गया. तो दो प्रकार की गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेरियन. ऑथोरिटेरियन मतलब जहाँ पर अधिराज्यशाही है, कि जहाँ पर अधिराज्य चलता है. टोटलिटेरियन, इट मे बी गवर्नमेंट काइंड ऑफ ऑथोरिटेरियन, मे बी ओलिगार्किक गवर्नमेंट, कैन बी मोनार्किक, या कोई राजा हो सकता है, डिक्टेटर हो सकता है. ओके, सो ये हो सकता है. चलो इसकी कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं. इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल हैव राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव. फॉर एग्जांपल इंडिया, यूके, यूएसए. ओके, ये तीन देशों के नाम बहुत सहज है, आप जानते हैं, इसलिए उदाहरण के तौर पे भारत हो गया, यूके हो गया, यूएसए हो गया. यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, मतलब यहाँ पर जो सरकार चलाने वाले लोग हैं
वो लोगों के प्रतिनिधि होते हैं, लोग उनको चुन कर देते हैं चुनाव के द्वारा, आम चुनाव के द्वारा वो सरकार सत्ता में प्रस्थापित होते हैं। ये लोगों के प्रतिनिधित्व इसलिए लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, इनके द्वारा लोग ही सत्ता चलाते हैं, ऐसा ही होगा, इसलिए हम इसको लोकतंत्र कहते हैं। गवर्नमेंट बाय द पीपल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, जो कहते हैं कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए चलाई हुई सत्ता जो होती है, इसको हम लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट जो होती है ये कुछ अलग टाइप की गवर्नमेंट है। लाइक यू कैन इमेजिन द बेनिटो मुसोलिनी ऑफ इटली, हिटलर ऑफ जर्मनी, ये लोग, लाइक किम जोंग उन अभी जो नॉर्थ कोरिया का है, ये ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट की प्रस्तावना की है, जहाँ पर एब्सोल्यूट ओबीडियंस होता है अथॉरिटी। ये जो अथॉरिटी होती है उसको एब्सोल्यूट मतलब इनके बनाए हुए कानून का, नियमों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, किया तो उसको सज़ा मिलती है। सज़ा तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मिलती है अगर किसी भी तरह से अगर कानून को तोड़ा जाए तो। लेकिन ऐसे स्ट्रिंजेंट सजाएं नहीं होती, वो सर्कमस्टांसेस को देखा नहीं जाता वहाँ पर। सरकार के खिलाफ जाना मतलब वहाँ पर देशद्रोही हो जाना होता है। और सो एब्सोल्यूट ओबीडियंस टू द अथॉरिटी वहाँ पर होता है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे डिटेल में, जब ये फिलोसॉफीज़ और कॉन्सेप्ट्स को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी हम जस्ट एट ए ग्लांस हम पहचान कर रहे हैं कि सरकार क्या होती है। ये तो अभी फ़िलहाल में एग्जांपल ऑफ म्यांमार और सऊदी अरेबिया या फिर नॉर्थ कोरिया जैसे एग्जांपल्स आप ध्यान में रख सकते हैं। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हमें एग्जिबिट करती है। सो हियर वी एंड अप द story, the session, and guys, we will keep on bringing for you very important basic concepts which will help you lot in understanding the syllabus of the UPSC। और आप इतना अच्छा फाउंडेशन बिल्टअप करोगे कि आप किताब पढ़ने लगोगे। वास्तव में जब बुक्स पढ़ोगे, रेफरेंस बुक, तो आपको वो समझना बहुत इजी हो जाएगा। आप बहुत जल्द समझ पाओगे, जल्द यूपीएससी की अपेक्षाओं पे खरा उतर पाओगे। इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं हूँ संदीप राठौड़। थैंक यू वेरी मच फॉर लुकिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।